Dear friends, in today's video, we are going to discuss regarding various microbiomes that affect our health. हम सब जानते हैं हमें पूरे डाइजेशन सिस्टम में बैक्टीरियाज भरे हुए हैं और our food is digested more by the bacteria. Bacteria create different types of metabolites. This microbiome, this creates metabolites. Not only from the nutrients, but from the bacteria. Now, as soon as this food goes to the stomach, it is passing through the duodenum, then small intestine and colon. Now, how different bacteria are there? They are floating inside the intestines, or they are sticking with the walls of the intestine, whether small intestine or small. And different types of bacteria are there in colons and small intestine. And these bacteria should not pass through the other organ. It means the colon bacteria should not go to the small intestine. This all we have discussed earlier. Now, why these are affecting our health? Because 80,000 blood vessels are surrounding this gut. And we know we are healthy because of better blood circulation. Or if blood circulation is bad, then we become sick. And we know that from the colons, total digestion is done in the small intestine. And only those items, say fiber, complex carbohydrate, which are not digested in the system, that is fermented here in the column. And by fermentation, different type of SCF, short chain fatty acids, vitamin B1, B9, B12, vitamin K, all these are produced here in the colon. And these also go to the through the portal vein to the liver, along with the nutrients which are coming from the small intestine. Now, the nutrients are converted into different metabolites, say carbohydrates into glucose, fructose, proteins into amino acid peptides, fats into fatty acid and monoglycerides, vitamins into fat soluble and water soluble items, and different type of minerals, iron and calcium are there, and water and electricity. All these go through the absorbed through the small intestine to the portal vein and goes to the liver, and from liver the correct amount which is decided for the body, that is decided by the liver. Liver segregate toxic material or extra quantity. So whatever quantity is required, that without oxygenated this plasma, rather without oxygenated blood goes to the heart, and then it goes to the lungs and oxygenated, and then some oxygenated blood comes to the liver for better functioning of the liver. So what are the
nutrients, they are coming out of the food and create different metabolites. Similarly, the bacteria, different bacteria, they create different type of metabolites. Some are short chain fatty acids, tryptophan metabolites, choline metabolites, bile acid metabolites, and a specialized one, that is antibiotics or antifungal. What is this? If you see, all these are created in the colon. The biles which has reached to the food in the duodenum, they are collected back in the form of bile acids, and at the last part of the small intestine, it is going back to the portal vein and to the liver so that it can be recycled. Now, if toxic metabolites, which include formaldehyde, undigested food जिसे आम भी बोलते हैं, ammonia, glycolic acid, etc. If these are not excreted, they can cause aging, because these metabolites, you can say, they make us unhealthy, they cause aging, increase our blood pressure, they may create cancer, diabetes, liver, and kidney problems. So it means whatever items are not required by the body, those toxic metabolites must be excreted. Now, how these bacteria, they are functioning, where they are living? These bacteria are residing inside the intestine and colons. And no bacteria from one organ is allowed to switch over to the other. Otherwise, you will have problem. तो अगर देखें, हर जगह के बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से हैं, और जो वाल में जो सेल्स लगे हैं, एंडोक्राइन सेल्स, एंट्रिक एंडोक्राइन सेल्स, they generate hormones and neurotransmitters that help in the enteric nervous system to work as a sensory neuron. तो अगर आप देखें, 90% sensory neurons are sending signals to the brain, जिससे हमारा मूड अफेक्ट होता है. कहते हैं कि अगर आपका पेट सेटिस्फाइड है, अब आप खाने से अगर पूरी तरह सेटिस्फाइड है, तो आपका ब्रेन भी पूरी तरह सेटिस्फाइड होता है. But at the same time, only 10% afferent fibers, they are coming down to the gut. इसका मतलब है कि गट अपने सेंसिंग न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन को तो इंफॉर्मेशन देता है, और इससे ब्रेन सेटिस्फेक्शन महसूस करता है या इरिटेशन महसूस करता है अगर वो गट से सेटिस्फाइड नहीं है. लेकिन गट के फंक्शनिंग में only 10% motor neurons help. They do not need any help from the brain, because the enteric nervous system, ENS, that is a autonomous system. It's a part of the autonomous system. This can act as a second brain. And by this, when different amino acid metabolites are created, some are tryptophan, which creates serotonin and melatonin. Another amino acid metabolite is tyrosine. They produce dopamine and norepinephrine, all in the gut. So if you see, 95% serotonin is produced in the gut, while 50% dopamine is produced in the gut, though
5 to 10% are produced in the brain, sir. And dopamine also, 50% dopamine is in the brain, is produced in the brain. But even 50% they are produced in the gut. Similarly, the glutamate is converted to GABA just to break anxiety, so that you are not having anxiety anymore, or to reduce anxiety, to break anxiety. The glutamate is converted to GABA. And this also with the amino acid, which we can call glutamic acid or glutamate amino acid. If you go into the detail, we'll find that in different body organs, different type of metabolites are created, are functioning. Just see, in colon, there are fiber metabolites. So colon produces SCFA, short chain fatty acids also. और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स. अगर आप देखें, we are having 95% SCFAs in the form of butyrate, propionate and acetate. They are very important to keep us healthy. आगे देखेंगे कि हमारे वात पित्त कफ में इनके रेशियो भी अफेक्ट करते हैं कि हम वात टाइप के हैं या पित्त टाइप के हैं या कफ टाइप के. देखेंगे. Let us see what these short chain fatty acids are doing. Propionate helps in glucogenesis by liver, promoting satiety. हम सेटिस्फाई महसूस करते हैं कि हम संतुष्ट हो गए खाने से, हमारा पेट भर गया, और ये हमें कौन बताता है? प्रोपिनेट. और with the help of this we are preventing obesity and diabetes. अगर हम अपने आप को रोक देते हैं, खाना और नहीं खाते हैं, तो नेचुरली ओबेसिटी से बच जाते हैं. क्योंकि सफिशिएंट फूड केमिकल्स बॉडी को मिल गए, दैट प्रोपियोनेट इंडिकेट. सिमिलरली द एसिटेट क्रिएट करता है ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू पेरिफेरल टिश्यूज को, और इससे लिपिड सिंथेसिस होता है बॉडी. डिफरेंट टाइप के कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स प्रोफाइल्स दैट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एसिटेट. जहां पर भी एसिटेट ज्यादा बनता है, वहां पर लिपिड प्रोफाइल हैवी होगा. सिमिलरली ब्यूटेरेट, जो ब्यूटेरेट मेटाबोलाइट है, जो फैटी एसिड है, वो क्या करता है? क्रिएट एनर्जी फॉर कॉलन सेल, जिससे कॉलन के सेल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, वो सटे रहते हैं. दिस रिड्यूस इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेंथ इन गट लाइनिंग. गट की लाइनिंग स्ट्रेंथ होती है, मजबूत होती है, गट लीकेज नहीं होता. एंड इन्फ्लुएंस इम्यूनिटी, इम्यूनिटी सिस्टम बेटर रहता है. These are the colon metabolite, that is fiber metabolites. When fiber is fermented in the colon, these metabolites are created. अगर आप टोटल मेटाबोलाइट्स को देखें, तो you can divide into primary metabolites or secondary metabolites. These are the essential, we can say. Primary metabolites, they are structural building blocks, जिससे हमारा शरीर बनता है, शरीर में ग्रोथ होती है. तो इसमें क्या आता है? अमीनो एसिड्स, अल्कोहल्स, विटामिन्स, पॉलियल्स. पॉलियल्स क्या है?
जो स्वीटनर है, जो स्वीट ना होते हुए भी स्वीटनर की तरह है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? These are for the defense purpose, for signaling. Antibiotics, pigments, some toxins comes in this category, and neurotransmitters and hormones. Well, such metabolites which are not used for structuring building block, rather they are used for sensing. अगर देखें एक और मेटाबोलाइट्स है जो कि ड्रग्स के थ्रू, जो हमें बीमार पड़ जाने पे दवा लेनी पड़ती है, जो ड्रग लेते हैं वो क्या करते हैं, दैट लीवर टेक्स डाउन टू वाटर soluble फॉर्म टू एक्सक्रेट, कि जो भी है हमारा शरीर से बाहर निकल जाए अपने काम करने के बाद। तो इस तरह से हम डिफरेंट मेटाबोलाइट्स, डिफरेंट टाइप के मेटाबोलाइट्स बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में जनरेट करते हैं। वी सी समटाइम्स वी हैव सीरियस डिसीज, वी आर सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसीज। हमें बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों हो जाती है? वो देखिए, इसके लिए भी हमारे माइक्रोबायोम या मेटाबोलाइट्स रिस्पॉन्सिबल। जब हम मीट, एग या कॉलिन रिच फूड्स खाते हैं, वी आर टेकिंग, एक प्रॉपर डाइजेशन ना हो इनका तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। आर दीज फूड आइटम्स, दे आर डाइजेस्टेड बाय द गट बैक्टीरिया एंड they create trimethylamine, TMA. This is the metabolites that is created by the gut bacteria. And this trimethylamine that goes to the liver through portal vein, same portal vein जिसमें nutrients भी जाते हैं. And there it is oxidized by the liver and create TMAO, trimethylamine N-oxide. And this TMAO is responsible for arterial plaque. तो हार्ट फेलियर और स्ट्रोक इसकी वजह से हो जाता है। They can create glucose intolerance. हमें डायबिटिक टाइप की और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। They can create fatty liver, kidney diseases, IBD, and even they go to the extent to create neurodegenerative diseases in the brain. So it means TMO is very, very harmful. This should be excreted from the body. ये कुछ तो रेनल सिस्टम से जाता है, एक्सक्रेट होता है, कुछ स्वेट से, कुछ ब्रीदिंग से, और वैसे ये बड़ा फिशी ऑर्डर क्रिएट करता है। आपको दिखते हो किसी के पसीने में बदबू आ रही है, सांस में बदबू आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस. This has not been properly neutralized by the liver and it has come to the excretion system. इस तरह से है. और वही शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्या करता है? This lower blood pressure, lower inflammation. It means short chain fatty acids, they are good for the health, while TMAO, they can create problem for the body. Though we eat different type of things in our food side, meat, egg, or this thing just to have protein, but we have some disadvantages also. If trimethylamine is not properly utilized by the liver and by their body systems, and TMAO is created, trimethylamine N-oxide is created. क्या आप देखेंगे
उससे हमारी शरीर में भी बदबू आएगी और हमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होने का भी डर रहेगा. Friends, if you like this video, please subscribe and press the like button. Subscription is must so that you can get more videos which we are going to create. Thank you.